Good morning, dear students. Today we initiate new topic, probability. Students, this is really very important and interesting topic. What do you mean by probability? All the possibilities of doing any task. Students, किसी भी टास्क को करने के लिए जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, चांसेस बन सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, possibilities of lockdown due to COVID-19, and second example you can say probability of raining, and next is probability of sunny day, and you can also say that probability of launch of vaccine of coronavirus. So students, in this way you can see that probability is all around you. So students, तो आज हम ये टॉपिक इनिशिएट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी. स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द फर्स्ट डेफिनेशन. फर्स्ट इज द सैम्पल स्पेस. व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पल स्पेस? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स एसोसिएटेड टू एन एक्सपेरिमेंट. स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स जुड़े होते हैं और हम उनकी कलेक्शन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पल स्पेस. अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकते हैं? सपोज इफ़ वी आर प्लेइंग लूडो, एंड सपोज इफ़ वी आर टॉसिंग द कॉइन्स, एंड you can also give examples, practical examples. Suppose two persons are playing badminton. So students, जितने भी cases possible होते हैं वो सभी हम कलेक्ट करते हैं related to an experiment. Associate. Okay. So students, here we have next definition is the probability. What is probability? Let S be the sample space of an experiment having m elements. S यहाँ पर sample space है and it has total m elements. E be the event associate with the same random experiment having n elements. Then probability of happening of event E is probability of E is equals to number of elements in event E divided by number of elements in sample space. Students, definition का क्या मीनिंग है? सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज इफ़ वी आर टॉसिंग अ कॉइन. अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो नेचुरल सी बात है, या तो टेल आएगा या हेड आएगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी गेट द टू आउटकम्स, ईदर वी गेट टेल और हेड. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सैम्पल स्पेस. बट यहाँ पर E एक इवेंट है जो कि एसोसिएटेड है विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट. वी कैन ऑल्सो से दैट E बी द इवेंट दैट वी विश दैट टेल ऑकर्स. ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर हम विश कर रहे हैं कि टेल के ऑकर होने के क्या चांसेस हैं, तो हम देख सकते हैं कि टेल कितना टाइम ऑकर कर रहा है सैम्पल स्पेस में, सिंगल टाइम ऑकर कर रहा है. ओके. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे we find the probability of event that we wishes. Okay. But यहाँ students as sample space है having m elements and E be the event associated with the same random experiment and that having n elements. And students, one more thing you have to note down. This n elements are always less than or equal to m. N is always less than equal to m. Okay. So students, then probability of happening of event E is number of elements in event E divided by number of elements in sample space. Here event E contains total n elements and sample space contains total m elements. So students, हम ये formula use करेंगे in the questions. Now here we start with case of coin. Students, suppose if we toss one coin, or if we toss two coins simultaneously, or we can say that two coins are tossed simultaneously or one coin is tossed two times.
स्टूडेंट्स आप 3 कॉइन्स भी टॉस कर सकते हैं, 4 कॉइन्स भी टॉस कर सकते हैं। तो हम इन सब के लिए हम अब केसेस बनाएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव वन ग्लांस ऑन दिस। Case of coin, first one is when we toss one coin, then number of outcomes are. So students, if we toss one coin, then sample space becomes tail, head. We get only two outcomes, that is tail and head. In this way we can write two elements. Next, when two coins are tossed simultaneously or a coin is tossed two times. स्टूडेंट्स दोनों ही बातों का सेम ही मीनिंग है। अगर हम टू कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ, या हम एक कॉइन को टू टाइम्स टॉस करेंगे, देन नंबर ऑफ आउटकम्स आर tail, 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 head, head, tail, head, head. In this way you can observe that total numbers are 4. And students हम 4 को लिख सकते हैं 2 raised to power 2. And in the first we get 2 raised to power 1. And if we toss 2 coins then we get 2 raised to power 2. Next students, अब आपको एक relation बनाना है इन cases में. Okay. Third one is when 3 coins are tossed simultaneously, then number of outcomes are. Suppose students हम 3 coins को एक साथ टॉस करते हैं तो हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। और ये कितने हैं टोटल नंबर्स में 8, और हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 raised to power 3। सो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से एक सिमेट्री देखेंगे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं देन वी गेट 2 raised to power 1। इफ़ वी टॉस 2 coins then we get 2 raised to power 2। If we toss 3 coins then we get 2 raised to power 3। Similarly in journal here we reach at a journal result that if we toss 10 coins then number of outcomes in sample space are 2 raised to power 10। So students, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, आपसे कितने भी कॉइन्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें जो सैम्पल स्पेस आप बनाएंगे हम यहाँ जनरल रिजल्ट यूज़ करेंगे। ओके, मैंने आपको इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है ओपन करके। ओके, सो स्टूडेंट्स होपफुली आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी एंड दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक यू कैन सी। सो thank you for watching the complete video.